Hello students, welcome to the Tantray physics classes. We continue our lecture series on vectors and this is the fifth lecture on vectors. हमने पहले ही डिस्कस किया है डॉट प्रोडक्ट और आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट एंड then finally I will give you this problem set on vectors and we will solve that problem set here in one more lecture. Point number one, that is I am going to discuss. Last time I discussed with you dot product. I want to give some applications of dot product before we go to the cross product. One of the application is, suppose I have a vector 2i. It is a vector 2i. It is a vector in the x direction only. It has no y and z components. इस वेक्टर का x component है 2 and direction is I, that is x axis. Suppose I want to know what is this x component. That is obviously 2. But how can we get x component of this vector and j component of this vector and k component of this vector? आप कहेंगे x component 2 है और y component 0 है और z component भी 0 है. वो आप पहले ही कहेंगे. You already know that, आप पहले ही जानते हो. लेकिन I will show you the technique by which you can find that. In this case you may it is very easy to find out. लेकिन और भी cases जो है और cases में ये easy नहीं होगा. तो उन cases में technique apply करके हम उन components को निकाल सकते हैं. Okay. So I want to find the x components. What I do, vector A को मैं I के साथ dot करूँगा. To find the x component I will dot with I. To find the y component, I will dot with j. To find the k component, I will dot with k. That is all. तो अगर मैं I के साथ इसको dot करता हूँ, so it is A is 2i, dot I dot I is 1, it is 2. So you were already knowing the x component is 2, but we got it by a procedure. I have dotted it with I and I got 2. तो यहाँ देखते हैं हम, अगर 2i को मैं j के साथ डॉट करता हूँ तो I डॉट j is 0. So j component is y component is 0. तो अगर मैं इसको 2i डॉट k के साथ तो वो भी 0 है. तो हम टेक्निक क्या है ये? टेक्निक ये है कि अगर आपको किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है किसी और डायरेक्शन में तो उस डिफरेंट डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ डॉट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव vector A is equal to 2i plus 3j minus 4k. X component is 2, y component is 3 and k component is minus 4. So question I will make, what is the component of A in I plus j direction? इस वेक्टर के ओर क्या कंपोनेंट है? That is not 2, that is not 3, that is not 4. Because 2 is the component in the x direction, 3 is the component in the y direction, 4 is the minus 4 is the component in the k direction. लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस वेक्टर का I plus j वेक्टर के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है? तो टेक्निक इज सो सिंपल. व्हाट यू डू इज, इस वेक्टर A को डॉट करेंगे आप. किसके साथ? I plus j के साथ नहीं, I के साथ नहीं, j के साथ नहीं, I plus j का जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ. तो यूनिट वेक्टर n यूनिट वेक्टर. सो इट इज A दैट इज 2i plus 3j minus 4k. डॉट करना पड़ेगा इस n यूनिट वेक्टर के साथ. वो n यूनिट वेक्टर जो है वो इसका n यूनिट वेक्टर है, दैट इज I plus j divided by root of 1 square plus 1 square. This is the unit vector of this vector. So if you dot it, 2i dot I is 2, 3j dot j is plus 3, 4k dot I or j that is 0 divided by root of 1 square plus 1 square that is 2, 5 by root 2 is the answer. That's all. So what we have learned, you can find the component of a given vector in any other direction. That is the technique. So you have to dot the given vector with the unit vector of that new vector through which you want to find the
component. Okay, let me give you more examples on this so that you become quite familiar with this. Suppose I have a vector f that is okay, 4i minus 2j. Find its component. Find its component in 2i plus 3j direction. First of all, इसका डायरेक्शन क्या है? 2i plus 3j का डायरेक्शन क्या है? Okay, let me find this direction first. तो क्या है वो डायरेक्शन? n यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर that is 2i plus 3j divided by root of 2 square plus 3 square. What's that? That is 2i plus 3j divided by root of 9 plus 4, that is 13. This is its unit vector. तो अब ये जो इस वेक्टर का मुझे कंपोनेंट निकालना है इस डायरेक्शन में, तो इस वेक्टर को डॉट करो इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ, तो क्या है वो? f डॉट n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस 2j डॉट किसके साथ करेंगे आप? इसके साथ डॉट करना पड़ेगा, दैट इज 2i प्लस 3j डिवाइड बाई रूट 13 इज इक्वल टू, अच्छा 4i को जब 2i से डॉट करोगे तो क्या मिलेगा? 8. 2i को 2j को 3j के साथ डॉट करोगे तो क्या मिलेगा? दैट विल बी माइनस 6. माइनस नो प्लस इज दैट माइनस 6 whole divided by root 13. That is 8 minus 6, that is 2 by root 13. That is the answer. So this is the technique by which we can find the component of a given vector in any direction. Okay. Number second. One more application of dot product. Very important application which is widely used in physics, widely applicable in different branches of physics. What is that? Second, अगर मेरे पास दो डॉट प्रोडक्ट है सिमिलर वेक्टर्स का, that will simply a square. A dot A is a square, B dot B is B square. Dot product of two similar vectors, equal vectors, is the square of it. So what I do, let me differentiate from both the sides. Let me differentiate this equation. But before I differentiate, let me suppose A magnitude, that is A only, is constant. It does not change. Magnitude of a vector does not change. Direction may change, but the magnitude does not change. So differentiating both sides, we get what we get by differentiating both sides. Okay, I will differentiate this. A differentiation of A, that is, okay, dA with respect to time dt dot A प्लस, मैंने इसका डिफरेंशिएट किया, डॉट करके इसको ऐसे ही रखा, प्लस अब इसको ऐसे ही रखना है, तो डिफरेंशिएशन इसका करना है dA by dt. दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द लेफ्ट साइड. ए को डिफरेंशिएट किया, इस ए को डिफरेंशिएशन किया, इस ए को ऐसे ही रखा, फिर इसको ऐसे ही रखना है और इसको ऐसे ही रखना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है. This is a differentiation, UV form differentiation. Differentiation of U, U differentiation of V plus V differentiation of U. That is the rule is equal to right side का differentiation होगा 0 because we suppose it to be constant. So here we can write it is the same quantity, this and this, because they are equal. And by commutation rule, A dot B is B dot A. चाहे ये dA by dt dot A हो या A dot dA by dt हो, या they are equal by commutation rule. तो इसका मैं क्या लिखूं? That is 2 times A dot dA by dt is equal to 0. Okay, and that makes it A
vector dA by dt is equal to 0. Okay, now what does this indicate? What physics it has? What physics it has? The physics behind this is, अगर मेरे पास वेक्टर A उसको डॉट में करता हूँ dA by dt से और मुझे मिला ये 0, क्योंकि A का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसका मतलब ये है वो वेक्टर और उसका डेरिवेटिव जो है दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर, मीन्स A and dA by dt are perpendicular, because you know if the dot product of two vectors is 0 then they are perpendicular to each other, they are normal to each other। मतलब अगर A का डायरेक्शन ये है तो dA by dt का डायरेक्शन ये है, they are 90, that is why their dot is 0. So that's the physics behind. So in general, अगर magnitude of a vector is constant, if magnitude of a vector is constant, that means the vector and its derivative and its differential coefficient are perpendicular to each other. That's it. So इसका मतलब यह है कि फिजिक्स में जब हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? Because finally we have to apply these ideas, these rules in physics. तो फिजिक्स में जब इसी चीज़ को मैं अप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा? तो फिजिक्स में यह मिलेगा मुझे, हैव अ लुक, अगर वेलोसिटी है, इट्स ए वेक्टर, वेलोसिटी इज ए वेक्टर, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट्स ए वेक्टर, अगर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब जो इस वेलोसिटी का डेरिवेटिव है dv by dt वो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होना चाहिए। इफ वेलोसिटी, if this the velocity is a vector, if its magnitude is constant, then its derivative has to be perpendicular to the velocity. Okay, magar by the definition it is acceleration. It is acceleration, or of course force is equal to mass into acceleration. That is, force has the same direction as acceleration if mass is constant. तो इसका मतलब क्या है? What does this indicate in physics? इसका मतलब ये है कि if speed is constant, means magnitude of velocity is constant, this all means if velocity is magnitude of velocity is constant, then acceleration, this one, or force, or then acceleration or force is perpendicular to velocity. That's all. This is the concept. If you allow me to give one more example in circular motion of this. Why I do this? Because finally जो vectors है हमें ये physics में apply करना है. Vectors may be quite interesting for mathematics people. They do lot of vectors. मगर physics के लिए वही vector ज़रूरी है, वही vector का part ज़रूरी है जो physics में इस्तेमाल होता है. That's very important. You may have learnt about circular motion, a particle moving in a circle with constant speed. Velocity is changing because direction of velocity changes all along. But if speed is constant, that is a particle moving in a circle with constant speed. And you have so many examples for that. If we suppose to be Earth moving around the sun with constant speed, although speed is not constant, it is almost constant because the orbit is not circular, it is a little elliptical. Agar ye hai, so what should be the direction of the force acting on this particle? The direction of force has to be like this, or acceleration should be like this. The same direction and acceleration have the same direction. Iska matlab ye hai कि in a circular motion when a particle moves at a constant speed,
The force is towards the center, always perpendicular to velocity. Why? Because that's the concept of vectors. If magnitude of a vector is constant, then the derivative of a vector, means here it is acceleration, derivative of the vector is always perpendicular to velocity, perpendicular to the vector. If the particle is here, the velocity is this, and force has to be this, again perpendicular. If particle is here, velocity is this, force has to be this. Particle is this, force has to be this. This is the concept. The concept is if the magnitude of the vector is constant, then its derivative has to be perpendicular to the given vector. Okay, now let me go to the cross product of two vectors. Point number second. Point number second. Cross product of two vectors. Cross product of two vectors. Cross product of two vectors. Written as like this, defined as like this, A, read as A cross B. और definition क्या है A cross B का? A magnitude, B magnitude just multiplied, sine of angle between these two vectors. This is the definition. A cross B is defined as the product of magnitude A, magnitude B, and sine of angle between the two vectors. It is the definition. Okay. Also, this cross product is defined to have direction. This unit vector, where the unit vector, where n unit vector has the direction perpendicular to A and B. ये जो यूनिट वेक्टर है A क्रॉस B का जो डायरेक्शन है n, that direction is perpendicular to both A and B, given by the right hand rule. That I will explain a little further. Have a look here. These are the two vectors. Let me suppose these are the two vectors. This one, this is A, this is B. This is vector A, this is vector B. First of all, the students have to imagine the plane in which A and B lies. ये A और B जो है, ये किस plane में lie करते हैं? You can always make a sheet of paper containing these two vectors. आप एक imagine कीजिए, एक sheet कीजिए, plywood sheet कीजिए imagine, जो ये दो vector को जिसमें lie करते हैं. तो जब आप उस sheet को देखेंगे, जिसमें ये दो वेक्टर लाई करते हैं, फिर क्या करना है? उस शीट पर आपको परपेंडिकुलर डालना है. If this is A, this is B, this is the direction of A cross B defined. The defined direction of A cross B is this. It may be upwards, perpendicular to the plane like this. It may be perpendicular to plane like this, downward. For that, you have to use your right hand. With your right hand, through this shorter angle, you have to put your hand like this to sweep towards B. You have to put your hand on A and you tend to sweep your hand towards B. And watch where the thumb goes. So put it here and try to curl your fingers towards B, right? Like this, and watch where the thumb goes. Thumb goes in the upward direction. Therefore, A cross B is this. So what about B cross A? For B, you have to put your hand like this. But you have to curl your fingers towards A. You can't curl backwards. You have to curl forward towards A. तो जब आप यहाँ अपना हाथ रखोगे, तो आपको अपने जो fingers है, curl करने हैं या wind करने हैं towards A. So it is something like this, and thumb comes downwards. When thumb comes downwards, so direction is downwards. So A cross B is upwards and B cross A is downwards. Therefore, A cross B does not follow commutative property. A cross B is not equal to B cross A. They are opposite to each other. So that is A cross B is not equal to B cross A. Instead, A cross B जो है, that is negative times B cross A.
वो यहाँ से हमें पता चलता है कि कैसे हम ये, अगर ये इट इज़ ए, इट इज़ बी, एक पर हाथ रख करके स्वीप करो टूवर्ड्स बी, तो ये हो गया डायरेक्शन। और अगर ये बी है, ये ए है, तो बी पर हाथ रख करके बी क्रॉस से डाउनवर्ड्स हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो प्लेन जो है जिसमें ये दो वेक्टर लाइक करते हैं उसको देखना पड़ेगा, उसको इमेजिन करना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाकर सिर्फ आपको परपेंडिकुलर डालना है, आइदर दिस और दिस। तो अब ये परपेंडिकुलर है कि ये परपेंडिकुलर है, उसके लिए राइट हैंड रूल लगाना, अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, दिस इज वन पॉइंट। Now by this definition A cross B, I want to know what is I cross I, what is J cross J, and what is K cross K. Those are the things I want to find and see for myself क्या उसका क्या वैल्यू आ जाता है। तो देखिए, by I cross I is equal to magnitude I by definition, magnitude I साइन ऑफ व्हाट साइन, I और I के दरमियान क्या एंगल है? ऑब्वियसली जीरो, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर्स है। ये हो गया जीरो बिकॉज साइन जीरो इज जीरो। J क्रॉस J, मैग्नीट्यूड J, साइन जीरो, अगेन जीरो। K क्रॉस K, मैग्नीट्यूड K, साइन जीरो, अगेन जीरो। So if you cross two similar vectors, the answer is zero. By the same argument, if I ask you what is A cross A, the answer is zero. Any vector crossed with itself is zero. Okay, now let me go to I cross J. I cross J. I cross J. I cross J. What is this? Okay, it is magnitude I, magnitude J, sine of 90. So what is value? The value is 1. 1, 1 and 1. Multiplied 1. But what's the direction? Direction को क्या है? देखो, direction को दिखाना पड़ेगा आपको. Direction is found like this. Have a look. It is I, it is J, it is K. I, J and K, X, Y and Z. Okay? Now, these are the three vectors, X, Y and Z, X, Y and Z. So, I am crossing I and J. What is I cross J? तो ये प्लेन को इमेजिन कीजिए, इस प्लेन को, I cross J प्लेन को इमेजिन कीजिए। तो this is perpendicular to that, this K is perpendicular to this and this, or to the plane of this and this. ये I और J एक प्लेन में है और ये जो K है उसको परपेंडिकुलर है। इसका मतलब I क्रॉस J का डायरेक्शन K है। So that's all. So it is K here, it is K here, it is K here. So I cross J is equal to K. And what about J cross K? J cross K is equal to I by similar arguments. What is K cross I? That is J. I cross J. I cross J is K, J cross K is I, K cross I is J. अच्छा, अगर इसका उल्टा लिया जाए तो क्या होगा? Suppose J cross I, that is minus K, और K cross J, that is minus I, and I cross K, that is minus J. That is all. That you have to remember now. First understand, then you try to remember, because finally you have to apply these things. Okay, now let me go find A cross B in terms of components of A and B. So how that could be done? A cross B, again A cross B. You know it is AB sine theta n unit vector. If I ask you what is this n unit vector? So n unit vector is vector, that is A cross B vector, by its magnitude. Magnitude is how much? This one is the magnitude from here to here. So it is AB sine theta.
Okay, now A cross B is equal to, can we write A into components? क्या हम इसको कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं? हाँ, AXI प्लस AY J प्लस AZ के। क्रॉस किसके साथ करें? B के साथ। तो क्रॉस करके B के लिखिए कंपोनेंट, BXI प्लस BYJ प्लस BZ के। सो A को यहां रखो आप, B को यहां रखो, बीच में क्रॉस। अब जब AXI को पहले किसके साथ क्रॉस करना है? इसके साथ, फिर इसके साथ करना है, फिर इसके साथ क्रॉस करना है बाज़ाब्ता, इसको इसके साथ करना है, इस चीज़ को तीनों के साथ क्रॉस करना पड़ेगा, इस चीज़ को तीनों के साथ क्रॉस करना पड़ेगा, और आपको एक अच्छा खासा एक्सप्रेशन यहाँ मिलेगा। ठीक, लेकिन उसको करने के लिए एक छोटा तरीका भी है, एक टेक्निक भी है। आप एक डिटरमिनेंट बनाइए I, J और K ऐसे करके। फिर दूसरे रो में आप A के कंपोनेंट्स लिखिए, फिर तीसरे रो में B के कंपोनेंट लिखिए, BX, BY, BZ। अब जाकर यह थोड़ा सा लिखने में आसानी, अदरवाइज ये आपको अच्छी तरह से क्रॉस करना पड़ेगा, और फिर क्रॉस करने के बाद आपको पता है I क्रॉस I इज 0, तो बीच में I क्रॉस I भी कहीं कहीं हो जाएगा, वो 0 बनाना। I क्रॉस J भी हो जाएगा, उसको K लिखना पड़ेगा। तो सबस्टिट्यूट करके अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक टेक्निक है, ये I पहले लिखा है इसे, और I के बाद जो I के साथ दो लाइन्स है उनको कट कर दीजिए, यूं कट किया और यूं कट किया, बाकी बचा ये छोटा सा डिटरमिनेंट बन गया। तो इसको लिखिए, इन दो को मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज AY BZ माइनस AZ BY। खत्म हो गया, दिस मल्टीप्लाई टू दिस, माइनस करके दिस मल्टीप्लाई टू दिस, प्लस J को ये कर दिया कट, ये कर दिया कट, वहां ये और ये बचता है, और ये बचता है। इस लाइन के साथ ये कट हो गया और ये कट हो गया, और हमें बचा ये और ये और ये। अब क्या किया हमने इस AZ को BX के साथ मल्टीप्लाई किया, AZ को BX के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस AX, इसका उल्टा, यहां AZ BX है, उल्टा करके AX BZ लिखिए याद रखने के लिए, प्लस K टाइम्स, उसके लिए ये खत्म और ये खत्म। हाँ, ये जो बीच में J है उसको J लिखा तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और K टाइम्स फिर से ये AX BY माइनस AY BX। तो याद रखने के लिए आसान भी है। देखिए, जो I है ना X कंपोनेंट की बात है, तो उसके आगे जो है उसमें X नहीं होता है, J के आगे, मतलब J कंपोनेंट के आगे यहाँ इसमें Y नहीं होता है, और K के आगे Z नहीं होता है। तो उस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं, I AY BZ माइनस AZ BY प्लस J AZ BX माइनस AX BZ। तो कुछ लोग यहाँ नेगेटिव करते हैं, लेकिन वो ये टर्म पहले लिखते हैं, बट आई प्रेफर टू राइट प्लस, तो उसमें ये आ जाता है। सो इट इज़, यू हैव टू वर्क ऑन दिस, आपको इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ताकि आप इसको याद रखो, और आगे जाकर इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, जब हम A क्रॉस B को देखते हैं राइट साइड में, इसमें I भी आया, J भी आया, K भी आया, दैट सिंपली मीन्स दिस A क्रॉस B इज ए वेक्टर, because we have already defined the direction. So A cross B is a vector product. A cross B is a vector. It is also called as a vector product. That's very important. Okay, now what are its applications? Cross product का application क्या है? Point number 4. Okay, let me rub it off. Point number 4. Point number 4.
एप्लीकेशन क्या है? फोर्थ पॉइंट, सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके दरमियान एंगल थीटा है। तो मैं इस दो वेक्टर से जो एक पैरेललोग्राम बनाता हूं मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, और मैं इस पैरेललोग्राम जो है इसका एरिया निकालना चाहता हूं। तो कैसे इस पैरेललोग्राम का एरिया आप निकालेंगे? तो इसका एरिया क्या होगा? बाय योर यूजुअल ज्योमेट्रिकल मेथड्स। ऐसे बाय यूजुअल ज्योमेट्रिकल मेथड्स even 9th क्लास स्टूडेंट कैन फाइंड इट आउट। तो क्या होगा? शाबाश। तो एरिया इज बेस इंटू हाइट। बेस इज द मैग्नीट्यूड ए, बेस इज द मैग्नीट्यूड ए, हाइट इज दिस। तो हाइट को इस ट्रायंगल से निकालना है, तो वो होगा बी साइन थीटा। तो मैं लिखूंगा यहां पर बी साइन थीटा। दैट इज द एरिया। Area of this parallelogram is base and height. Base is A and height is B sin theta, and that will give you what you call as the area of this parallelogram. But now this happens to be A cross B. So interesting. And also this area has a direction perpendicular to the plane of these two vectors. ये area का direction भी है इस ओर, perpendicular to the plane in which A and B lies. A and B lies तो करते हैं बोर्ड पर, तो मैं बोर्ड पर ही perpendicular डालूंगा। तो जब मैं A को B के साथ क्रॉस करूंगा तो that is this direction. So it is perfectly the area of a parallelogram made by two vectors. So cross product का ये भी एक application है कि if you want to find the area of a parallelogram made by two vectors, so you have to cross A and B. If you cross A and B, you will get the area of a parallelogram. So this is all for today. And finally, I request my students to subscribe to my channel, Tantray Sir Physics Classes, and the lectures will continue for some more days on vectors, and then we will start a new chapter. Thank you.